हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है और आज हम एक वीडियो पे रिएक्ट करेंगे जो एक जेंटलमैन है। उनका नाम है लेक्स फ्रीडमैन। उनका एक पॉडकास्ट है जो कि लेक्स फ्रीडमैन ही आई थिंक उनके चैनल का नाम है। बट एनीवे, वो कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, एमआईटी में पढ़ाते हैं। मॉस्को में पैदा हुए थे बट मूव हो गए, इमिग्रेट हो गए जब वो बच्चे थे तो यूएसए में। टॉपिक ये है कि देखो, हम सबको पता है, आई मीन होपफुली, कि पुतिन जो थे वो जब एक हॉटशॉट पॉलिटिशियन नहीं थे, उससे पहले केजीबी के एजेंट थे। वो एक सिक्योरिटी सर्विसेज से निकला हुआ इंसान है। और जो टॉपिक जिस पे बात हो रही है वो ये है कि वो केजीबी के एजेंट तो थे, बट क्या वो एक अच्छे एजेंट थे, क्या वो एक कॉम्पिटेंट एजेंट थे? आई मीन, सिक्योरिटी सीक्रेट एजेंट होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, बट हर चीज़ में कॉम्पिटेंस की हायरार्की होती है। और वो कितने ज़बरदस्त एजेंट थे? क्या वो 007 के लेवल के एजेंट थे कि नहीं? इस पे डिस्कशन है, आओ देखते हैं। और मुझे लगता है बहुत इंटरेस्टिंग बात है। सिर्फ इतना ही पता होना कि केजीबी एजेंट थे या नहीं, ये आई गेस इनफ नहीं है। तो देखते हैं, फिर बात करेंगे उस बारे में। चैनल का नाम है लेक्स क्लिप्स। तो was not a good case. पीछे चले जाते हैं। I think elsewhere he said that Putin was not a good KGB agent. That's right. A mediocre one, but is an excellent politician. Yep. And a good organizer. He was known as a really, really good organizer. When Yeltsin hired him as prime minister, he cleaned up the mess because Yeltsin was it. ओके, आई डोंट थिंक येल्सिन ने उसको एज ए प्राइम मिनिस्टर हायर किया था। आई थिंक येल्सिन ने बिगिनिंग में उसको सेंट पीटर्सबर्ग के मेयर के तौर पे हायर किया था। मैं गलत हो सकता हूँ, बट ये शायद जहाँ तक मेरी नॉलेज है ये बात सही है। और सर कह रहे हैं कि मीडियोकर एजेंट थे वो। Under Yeltsin, Russia deteriorated tremendously, and it became sort of a mix of an oligarchy and a criminal enterprise and chaotic. So he had skills that made him a good executive. Oh, absolutely. Now let's go back to him as a KGB agent. He was a KGB agent. I mean, according to him, once a KGB agent, always a KGB agent. But 16 years, let's say, something like this. What do you think about, from your experience? Now you're maybe the same age as him, approximately the same age as him. He's a little younger. A little younger. Yeah. What do you think about the KGB experience he had made him the man he is? What aspect of that, from your own experience, how much does that define you, who you are, how you think about the world, how you analyze the geopolitics of the world, how you analyze human nature? Now, I got to tell you one thing. He had a different type of training than I did. Mine was one-on-one. ओके, तो ये जनाब भी जैक बार्स्की नाम है इनका। ये खुद भी एक केजीबी एजेंट रह चुके हैं। ओके, went to school, so to speak. तो मोस्ट लाइकली ये उन डिफेक्टर्स में से एक होंगे जिसकी बात अभिजीत चावड़ा जी कर रहे थे कि रशिया से बहुत सारे लोग डिफेक्ट होकर यूएसए चले जाते हैं। यस, right. But fundamentally, he was not a top agent. This is very simple. There's only one thing you need to know. He knows German pretty well. So where was he deployed? In East Germany. यस, आई एम सॉरी, मैं अपोलोजाइज करता हूँ। एज ए प्राइम मिनिस्टर ही अपॉइंट किया था बोरिस येल्सिन ने पुतिन को। बट मुझे आई डोंट नो, मुझे ऐसा लग रहा है फॉर सम रीज़न कि वो कहीं ना कभी ना कभी वो सेंट पीटर्सबर्ग के मेयर भी रहे हैं। Not in West Germany, not in Switzerland, not in Austria. That's where they sent the best, right? One would think. Generally. We're learning here. Right. So this is ओके, यस, जो कि मैं कह रहा था, आप शायद हमारी जब लास्ट टाइम बात हुई है केजीबी के बारे में, ये भी यही बात कह रहे हैं कि उस जगह पे वो बेस्ट अपने एजेंट्स भेजते थे। your classification of where they sent the best. There's people classify all kinds of stuff, like what is the best university in the world, what is the best football team in the world. You start to get a sense. The good guys get sent. The best athletes get sent to. We disagree on this, but what the football team is. But you have a sense, and you're saying that the best agents would have been sent. One would think so. Now, this is not a forcing argument, but I also have it from a word from the horse's mouth. Which horse?
what kind of horse? What's the breed of the horse? Oleg Kalugin. What kind of horse? You know who Oleg Kalugin is. I mean, he's still alive. He was at one point the head of counterintelligence for the first directorate, espionage, right? And Putin was in the first directorate and reported to Kalugin for a while. And Oleg told me to my face that Oleg was not an impressive agent trainee or agent. That Vladimir Putin was not impressive. Not impressive at all. Now, he's biased, given his current situation. Well, yeah, you know, he could still make it up because he had this big ruckus when he was in Parliament and called Putin a war criminal about the war in Serbia. Not only could he make it up, I wouldn't trust his analysis. I mean, I have to, you know, when people... I've been working very hard, even before this war, to try to understand objective analysis of all the parties involved. You have to really keep an open mind here to see clearly, to understand if you are to try to help in some way make a better world. In this case, stop this war, or have all the countries involved flourish, bring out the best of the people, remove the... Okay. अगेन जो ये बात कर रहे हैं, ये बात समझने वाली बात कि ये जो बंदा है ना जैक बार्स्की, इसको किसी बंदे ने बताया कलूगिन जिसका नाम है कि वो एक इम्प्रेसिव एजेंट नहीं था. एक टाइम था जब पुतिन कलूगिन को रिपोर्ट करता था और उसने इनको डायरेक्टली बताया कि वो एक इम्प्रेसिव एजेंट नहीं था. बट ये एक इनके बाद के कुछ फड्डे भी हुए हैं, उसका रीज़न भी हो सकता है, उसकी वजह से बायसनेस भी हो सकता है. वो ये बात बता रहा है और इनका कहना है कि उस बंदे को समझना इसलिए ज़रूरी है, उसकी कैपेसिटी को, उसकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को, उसके वीक पॉइंट्स को, क्योंकि जो ये सिचुएशन बनी हुई है यूक्रेन में उसके हल के लिए आई डोंट नो कितना हेल्प करेगा. मे बी नेगोशिएशंस में शायद हेल्प करे. Corruption and the greed and the destructive aspects of the governments and let the people flourish. For all of that, you have to put all the biases aside, all the political bickering, all the I don't know, all the biased analysis. And there's a lot of propaganda that says that, in fact, Putin was a good agent. Mm-hmm. How else would he rise through the ranks, right? Because he was a good politician, and he made a lot of good connections and within the KGB. Allow me to say something. You just taught me a lesson, and the lesson I should have figured out myself, because I keep on telling people that in the intelligence world you never know the truth 100%. So when you said Oleg could make that up, of course he could have. Yes, exactly. But you get to a point where you're forced to make a decision or have an opinion, and then you use your best educated guess. Yes. So I'm going to take the certainty of the statement that I made back. Yes. Because it's quite possible that you're right. ये इतनी अमेजिंग चीज़ है ना जो ये अभी ये जो हुआ है इस डिस्कशन में. एक बूढ़ा व्यक्ति जो कि ऑलरेडी अकॉम्प्लिश बंदा है, एक्स केजीबी एजेंट है, बहुत केपेबल और कॉम्पिटेंट बंदा होगा, चूतिए लोगों को नहीं बनाते वो अपना एजेंट. इस बंदे ने एक चीज़ क्लेम की, ठीक है, पूरी एक बंदे के आगे नहीं, पूरी दुनिया के आगे, क्योंकि पॉडकास्ट तो पूरी दुनिया, पोटेंशियली पूरी दुनिया देख सकती है. इसने एक चीज़ क्लेम की, सामने वाले ने उसे काउंटर किया या उसका काउंटर आर्गुमेंट दिया. बंदे ने इंस्टेंटली अपनी गलती मानी और एक्सप्लेन किया कि मैं कहाँ गलत था, और वापस ली अपनी, रिट्रैक्ट की अपनी स्टेटमेंट. यार जो भी इसे देख रहा है ना इस वक्त, वो अगर एक चीज़ सीख सकता है ना इससे, पुतिन का अच्छा एजेंट था या नहीं था इससे फ़र्क नहीं पड़ता, उसने किल कर दिया जहाँ पे वो है अभी भी और कर रहा है. किल एड इन लाइक फिगरेटिवली और लिटरली भी. ये चीज़ सीखो यार कि आप गलत हो सकते हो, ठीक है. अपने आप पे भी नज़र रखना कि मैं भी गलत हो सकता हूँ. ये आपको एज एन इंडिविजुअल रिफाइन करेगा. मुझे सीधे ही इस चीज़ ने अट्रैक्ट किया कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है, मेरे साथ भी हो सकता है ये. और ये मेरे लिए भी एक सीखने की चीज़ है कि मैं अगर किसी डिस्कशन में हूँ या किसी आर्ग्यूमेंट में हूँ और सामने वाला अगर एक लॉजिकल बात कर रहा है, तो 1 मिनट लेके उसकी बात को अपने ऊपर असर होने दो और सोचो कि शायद मैं हो सकता हूँ गलत. ये एक बहुत ट्रूथफुल थिंकर की निशानी है ये.
what I've noticed about Vladimir Putin, and this is true about, for example, Donald Trump and all those kinds of divisive figures, that for some reason people's opinion on the details of those people are very sticky. Once you decide this is a bad guy, there's like a black hole, and people are not able to think like one act at a time. You don't have to, like, that doesn't somehow justify this. This somehow doesn't remove all the evil things that are done, but you can analyze clearly each of the actions. And to me, it is interesting to see how did this man rise through the ranks. Now, you're saying that to be a KGB agent, there's a lot of skills involved. And perhaps raw technical skill of spycraft is perhaps not related to the skill of rising through the ranks. Right. And you're saying as a politician, he was good at rising. Lying and influencing, that is something that is significant, as a significant talent and ability that an agent must have. That helps you as a politician. Yep, मैं अग्री करता हूँ इस बात पे. और एक्चुअली इसने भी यही बोला. इसने एक्चुअली एलेक्स ने जो बात बोली है ना, मिस्टर फ्रीडमैन ने, वो ये बोली कि ट्रंप हो गया या पुतिन हो गया, ये एक इस टाइप के लोग होते हैं, बहुत ही डिवाइसिव होते हैं. इसका एक एग्जांपल मैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में मोदी दे देता हूँ. इनके बारे में जब आप एक ओपिनियन बना लेते हो ना, तो उस ओपिनियन को चेंज करना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट होता है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है. फॉर एग्जांपल, जो लोग मोदी को हेट करते हैं वो हेट ही करते हैं, और जो लव करते हैं वो लव ही करते हैं. सेम चीज़ ट्रंप पे, सेम चीज़ पुतिन पे अप्लाई होती है. इसका ओरिजिनल जड़ ना वही है जिसकी मैं 2 मिनट पहले बात कर रहा था, कि बंदे को अगर सामने से एक लॉजिक दिया जाए ना, तो बंदा उसको सोचे 2 मिनट उसके साथ, और अगर सोचेगा तो उसे रियलाइज जाएगा कि वो कहाँ पे गलत है. और ये चीज़, इस स्टिकीनेस को, इस स्टबर्ननेस को, किसी बंदे के बारे में ओपिनियन बनाने को, इतनी डिवाइसिव जो लोगों के बीच में हो जाती है, डिवीजन जो हो जाती है, अपने ओपिनियन को 100% एक्यूरेट, करेक्ट, फॉर एवर ट्रूथ मानने की जो लोग गलती कर देते हैं, वो गलती शायद लोग ना करें. मैं कई बार बीजेपी की गवर्नमेंट की प्रॉब्लम्स देखता हूँ और उनके बारे में बात कर देता हूँ, या मैं जनरली बहुत ही लाइक इंडियन सिविलाइजेशन के फेवर में हूँ. मुझे लगता है कि इंडियन सिविलाइजेशन ने बहुत कुछ दिया है दुनिया को, लेकिन उसकी जो नेगेटिव चीज़ें अगर मैं कई बात करता हूँ, तो कई बार देखने को ऐसा मिलता है कि लोग आर्ग्यूमेंटेटिवली या लॉजिकली काउंटर नहीं करते उस चीज़ को, सीधा ही कुछ ऐसे वर्ड यूज़ करना शुरू कर देते हैं कि मैंने कुछ मतलब कि मेरा एक बायस्ड अंडरलाइंग एजेंडा होगा ही होगा. एनीवे, आई गेस आज की दुनिया है ही ऐसी. इमीडिएट रिएक्शंस होते हैं लोगों के. टॉपिक को लॉजिकली एनालाइज करने में थोड़ी प्रॉब्लम है. हालांकि मेरी अपने लेवल पे जितनी भी छोटी कोशिश है, ये जो भी 1-2 लोग मुझे देख लेते हैं, यही चीज़ है कि मेरा गोल ये था इस चैनल पे वीडियोस डालने के लिए कि पीछे कि मैं देखता था कि लोग बहुत ही लिमिटेड लाइंस पे सोचते हैं और बहुत ही फिक्सेटेडली सोचते हैं. तो मैं थोड़ा सा ऐसा कोशिश कर सकूं कि मैं दोनों साइड की बात कर सकूं, या एटलीस्ट विचार करने के लिए इनवाइट कर सकूं. देखते हैं कुछ इसका फ़ायदा होगा कि नहीं होगा फ्यूचर में. बट एनीवे, मुझे इंटरेस्टिंग क्लिप लगी. ऑफकोर्स कुछ सीखने को मिला मुझे, होपफुली आपको भी मिला होगा. आज के लिए इतना ही.